Hello friends, welcome to Vedam mathematics classes. Okay, now I'm going to start with the chapter principle of mathematical induction of class 11. Principle of mathematical induction. In short form, we say that as PMI, class 11. Correct. First of all, we'll understand what principle of mathematical induction means. Principle of mathematical induction. Okay. In mathematics, there are mathematical expressions. To prove those mathematical induction, we need some principle with some suitable principle. That principle is a principle of mathematical induction. In this chapter, or I must say that PMI, for PMI, we need two steps. Okay, so let me just write it. Okay, suppose there is a given statement Pn involving natural number n such that natural number that starts from 0 and they are positive, and that too natural numbers are not decimal or fractional one. They are just 1, 2, 3, 4. Means 1.1 is not a natural number. 0.5 is not a natural number. Natural number means exact 1, 2, 3, 4, 5, 6 till as much as you want to go. There is no restriction on natural number. Okay, just one restriction, that it starts from 1, not from 0. Means 0 is not a natural number. The statement is true for n is equal to 1, and the second statement, if statement is true for n is equal to k, then statement is true for n is equal to k plus 1. Okay, now the question. Now I will see how do I apply all both these steps in the question. Okay, question 1 plus 2 plus 3 plus so on plus n is equal to n plus 1 by, this is a mathematical expression where my n is a natural number, means n is greater than or equal to 1. Correct. Means n की वैल्यू 1.1 2.2 ऐसा कुछ नहीं होगी, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 in an increasing order you have to take it. I have to prove it. So first of all, what I have to do is first of all we will define Pn such that जो पूरा expression है उसको present कर दो as a Pn, so that it will be easy for you to solve. Right, correct. Now we will check for n is equal to 1 P1 LHS क्या होगा, 1 plus 2 plus 3 plus so on plus 1. No. Why? This expression represents that we have to start from 1 and we have to end till any number greater than 1. And if n is 1 itself, then how can I move on? So my LHS is this part is wrong. So LHS is equal to only 1. Correct. Now RHS is n plus 1 by 2, that is 1 plus 1, this is 1 by 2, that is 2 by 2, that is equal to 1. Correct. So LHS is equal to RHS.
therefore Pn is true for n is equal to 1. Now we'll consider it. Now consider Pk such that 1 plus 2 plus 3 plus k is equal to k plus 1 by 2. Correct? Okay. Now I will prove it for k plus 1. Means we have to check for n equal to 1. For n is equal to k we will consider it, but for n is equal to k plus 1 we will solve it. Okay. Now for n is equal to k plus 1, p k plus 1 such that कैसा होगा 1 plus 2 plus 3 plus so on plus k plus 1 is equal to k plus 1. See, put in this, put n की जगह क्या आएगा k plus 1, n plus 1 की जगह आएगा k plus 1 plus 1, that become k plus 2, है ना. तो k plus 2 whole 2. करेक्ट. ये अब मुझे प्रूव करना है इसको. सो आई विल स्टार्ट विद LHS, that is 1 plus 2 plus 3 plus so on plus k plus 1, k plus 1. अब आपको मुझे एक बात बतानी है, ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और हम हर बार हर एक टर्म में प्लस 1 कर रहे हैं. टर्म मतलब ये टर्म ये टर्म ये टर्म, हर एक टर्म में प्लस 1 कर रहे हैं. 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 1 is 4, या 4 minus 1 is 3, 3 minus 1 is 2, 2 minus 1 is 1. तो k plus 1 से पहली टर्म कौन सी होगी? k ही तो होगी, क्योंकि k plus 1 minus 1 will be k. ओके. नाउ सी 1 plus 2 plus 3 plus k से k को हम क्या इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? क्या मैं 1 plus 2 plus 3 plus k की जगह ये पुट इन कर दूँ? देखिए 1 plus 2 plus 3 plus k की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? k plus 1 by 2 plus k plus 1. Correct. Now what you have to do? You have to take an LCM. It is very simple. This chapter is very simple. 2 times k plus 1 plus 2 times k plus 1. So what will I do? I will take out k plus 1 as common. K plus 1. We are left with k plus 2 by 2. So, I have to prove this. I have to prove this. K plus 1, k plus 2 by 2. And my answer is k plus 1, k plus 2 by 2. Okay. Which is equal to RHS. So my LHS is equal to RHS, which implies Pn is true for n is equal to k plus 1. So Pn is true for n is equal to k plus 1. Okay. Hence from PMI the statement Pn is true for all natural numbers. Done. Now second question, where this is an example. Actually this is an example 1 of NCERT. Example 1. Question is for all n greater than equal to 1, prove that 1 raised to the power 2, 2 raised to the power 2 plus so on plus 3 raised to n raised to the power 2 is equal to n plus 1 2n plus 1 by 6, 2n plus 1 by 6. So first of all what I will write, I'll write let Pn be of the form 1 raised to the power 2, 2 raised to the power 2 plus so on plus n raised to the power 2 is equal to n plus 1 2n plus 1 by 6. Okay.
Now I'll consider for n is equal to 1. So my P1 such that my LHS will be what? 1 raised to the power 2, 2 raised to the power 2. Again, every time I'm increasing by 1, the base is getting add by 1 every next term. So अब लेकिन मुझे तो सिर्फ n equal to 1 डालना है, तो I'll start from 1 and I will stop at 1. ठीक है ना? तो it will be 1 का square, that is 1 itself. Now RHS, I will put n की value 1, n is equal to 1 in RHS. 1 plus 1, 2 times 1 plus 1 upon में 6, that is 2 plus 1, that is 3 by 6, 3 to the 6 by 6, that is equal to 1, which implies Pn is true for n is equal to 1. Now we will assume या consider, let Pk be 1 raised to the power 2, 2 raised to the power 2 plus so on, plus not n. Now I will change, I will consider it as Pk. This is just the way of writing k plus 1, 2k plus 1 by 6. Now consider n is equal to k plus 1. So p at k plus 1, ये मुझे प्रूव करना है कि 1 raised to the power 2, 2 raised to the power 2 plus so on, k plus 1 raised to the power 2 is equal to, k की जगह क्या आ जाएगा? k plus 1. k plus 1 की जगह क्या आ जाएगा? k plus 2, k plus 1 plus 1. अच्छा चलो मैं दोबारा से लिख के दिखाती हूँ ये कैसे आएगा. इज़ इक्वल टू k की जगह k प्लस 1, हर एक k की जगह k प्लस 1, और एक्स्ट्रा में जो आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा. यही मिस्टेक होती है बच्चों की, रेस्ट कोई मिस्टेक नहीं होती इस टॉपिक में मोस्टली, क्योंकि ये एक ही पैटर्न से क्वेश्चन चलता है. k प्लस 1, k प्लस 2, 2k प्लस 2 प्लस 1, दैट इज़ 3 अपॉन में 6. मीन्स मुझे इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड को इसके इक्वल करना है, शो करना है, मुझे प्रूव करना है. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम LHS. ओके, LHS इज 1 raised to the power 2, 2 raised to the power 2 plus so on plus k plus 1 raised to the power 2. अब एवरी टाइम what I'm seeing is हर बार एक का इंक्रीमेंट है, तो अगर बैक में जाऊंगी तो एक का डिक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस के का स्क्वायर डिक्रीमेंट. द टर्म बिफोर के प्लस 1 स्क्वायर टर्म, दैट इज़ के का स्क्वायर. नाउ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के रेज़ टू द पावर 2 विल गेट सब्सटीट्यूटेड बाय दिस, बिकॉज 1 प्लस 1, यही रीज़न है यहाँ सब्सटीट्यूट करना है ना, यहाँ सब्सटीट्यूट करना है ना मुझे, इसीलिए मुझे ये वैल्यू कंसिडर करके लिखनी है. इसको मैंने माना 1. ठीक है, अब फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे? k प्लस 1, 2k प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस k प्लस 1 रेज़ टू द पावर 2. करेक्ट, फ्रॉम 1 यू विल राइट इट एज फ्रॉम 1. अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. k प्लस 1, 2k प्लस 1 प्लस 6 टाइम k प्लस 1 का स्क्वायर होल में 6. नाउ सी, दिस इज़ 1 टर्म, दिस इज़ सेकेंड टर्म. ठीक है, k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा. हम रहे किस में, क्या जाएगा हमारे पास? रह क्या जाएगा? 2k प्लस 1 प्लस 6 टाइम्स k प्लस 1 होल 6, दैट इज़ इक्वल टू k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 होल 6, दैट इज़ k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 अपॉन में 6. मुझे इसकी वैल्यू ये लेके आनी है, k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 मीन्स सी दे आर इन दी फैक्टर फॉर्म, मल्टीप्लाइड फॉर्म में. देखो मल्टीप्लिकेशन है सबके बीच में, लीनियर फॉर्म तो नहीं कहूँगी, बट ये एक फैक्टर जो है वो लीनियर फॉर्म में हो गया. ठीक है, मुझे ऐसे कन्वर्ट करना है. तो अब मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूँगी? मिडल स्प्लिटिंग से होगा, और कोई तरीका नहीं है. k प्लस 1, ठीक है, 2k स्क्वायर, 2 3 6, सो इट बिकम व्हाट? प्लस 4k
प्लस 3k प्लस 6। आपको मिल टर्म स्प्लिटिंग आती है? अगर नहीं आती है आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसके लिए आपकी स्पेसिफिक क्लास बना दूँगी जिससे कि आप उस वीडियो को देख के समझ पाएंगे मिल टर्म स्प्लिटिंग। 2k, k प्लस 2 प्लस 3 कॉमन, k प्लस 2 अपॉन में 6 विच इज़ इक्वल टू k प्लस 1 2k प्लस 3 k प्लस 2 अपॉन में 6। माई आंसर इज़ इक्वल टू RHS। चेक करो, k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 बाई 6 RHS विच इम्प्लाइज Pn इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1। ये आपको सब लिखना है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ये लिखना है लेट pk इज़ इक्वल टू दिस, लेट, हाँ ओके, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, विच इम्प्लाइज सो हेंस फ्रॉम PMI the given statement Pn is true for all natural numbers. Okay, thank you so much for watching my videos and do like and subscribe my videos. There are many more questions to solve for this topic. I will give you in each video different questions of NCERT itself, and if you watch it in a series you'll get each and every question and you'll understand the concept. And if you really understand the concept, please like and share the video and do subscribe as well. And if there is any mistake, please comment so that I can explain you in the video for that specific topic. Okay, thank you.